अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। मेरा नाम अली काजी है और मैं आज आप लोगों के साथ एक जनरल गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे पास आज गेस्ट तो नहीं है और ये ऑन पर्पस है ताकि मैं आप लोगों के साथ एक 1-to-1, अगर आप लोगों के पास कोई भी सवालात हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और जिस तरह राजा साहब का आया था इन रिगार्ड्स टू सर्विस चार्जेस एंड ग्राउंड रेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आप लोग ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपनी राय ज़रूर बताऊंगा। एक जनरल राय ही होगी विदाउट एक्चुअली नोइंग द एग्जैक्ट सिचुएशन, द एग्जैक्ट केस। मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता उसके ऊपर। तो अर्ज़ यही है आपसे कि एक जनरल आप लोगों को वे फॉरवर्ड बता देंगे। अच्छा, आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं 0208-662-4550 और ये लाइव स्टूडियो के अंदर कॉल आ जाएगी आपकी, जिसके अंदर मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँगा। अगर आप गुफ्तगू डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आप हमें ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। ईमेल हमारा है info@ikra.tv। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, info@ikra.tv। बड़ा आसान सा है। अच्छा, हमारे जो प्रीवियस शोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब के ऊपर भी चलते रहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर भी जाएं और वहाँ पर भी इकरा टीवी आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर इकरा टीवी जो है वो लाइव भी आता है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस देश में भी हैं, आप लोग इकरा टीवी ज़रूर देख सकते हैं। कमिंग बैक टू व्हाट वी वाज टॉकिंग बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक, हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या सिचुएशन है। डिमांड एंड सप्लाई की भी बात हमने थोड़ी सी करी थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि अनफॉर्चुनेटली जो सप्लाई है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम हैं और जो ख़रीदने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। और जब ये होता है सिनारियो, तो सबसे पहले प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं। और हम लोग यही देख रहे हैं पिछले 2-3-4 डेकेड से, एक्चुअली सिंस द प्रॉपर्टी मार्केट, सिंस जब से मुझे होश आया है, हम लोगों ने यही देखा है कि ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ही गई हैं। 2008 में एक छोटा सा ब्लिप आया था, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए ब्लिप आया था और जिसके अंदर 5-6-10% प्रॉपर्टीज़ जो थी वो नीचे गई थी। लेकिन उसके बाद हमेशा प्राइसेस ऊपर ही गई हैं। और वो ब्लिप आया भी क्यों था? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पर बैंक्स जो थे वो आपको पैसे नहीं लेंड कर रहे थे। और ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक्स नहीं लेंड कर रहे प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ मैसिव वेल देयर वाज अ प्रॉब्लम इन गेटिंग फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली लोगों के पास कम पैसे होते हैं प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए। अच्छा, हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर कॉल के बाद फिर वापस इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जी नौशेब बात कर रहा नौशेब, हूँ। लवली शो। नौशेब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं नौशेब साहब? जी मैं ये बोल रहा हूँ, ईस्ट लंदन से बात कर रहा हूँ मैं, ईस्ट ये लंदन। जी क्लोज टू बेथनल ग्रीन। जी 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 नौशेब, हुक्म करें, आपका अच्छा, क्वेश्चन। मैं जी मेरा क्वेश्चन ये है जी आपसे, फर्स्ट टाइम बायर का थोड़ा सा प्लीज एडवाइस मुझे कर दें। वो आई बीन लुकिंग अराउंड, लेकिन वो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जब आप रिसर्च करते हो ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्लीज इफ यू कैन गिव मी बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव, आई डोंट नो कि आप दोनों कैसे करेंगे, लेकिन इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी आउट विद नौशेब, आप दैट। बेसिक भी चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी चाहते हैं? Well, what I mean to say is in simple terms. अच्छा, इन सिंपल Simple. टर्म्स। हाँ तो जी। आपको ये मैं एक्सप्लेन करूं कि आया कि किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने फाइनेंसेस और ये सारा कुछ अपना कर लिया है? Yes, I'm pretty much there. अच्छा I wouldn't say I'm 100% ready, but I am. I will be ready in a week or two. अच्छा, ठीक है, ओके ओके। तो नुशेब, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए और क्या क्या होगा बीच में, ताकि आपकी एक फुली प्रेपरेशन हो जाए। Thank you very much. Thank you थैंक यू very सो much. मच, थैंक यू, थैंक यू। नौशेब का फ़ोन आया था ईस्ट लंदन से और वो फर्स्ट टाइम बायर हैं और वो पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट, अभी वो शुरुआत करने लगे हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा अपनी एडवाइस ज़रूर दे दूँ। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
وہ یہ ہے کہ یو فرسٹ آف آل نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ یو کین افورڈ. اچھا, اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ آیا کہ یا تو موگیج ایڈوائزر کے پاس جائیں یا آپ ڈائریکٹلی بینک کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اٹ کین بی ڈن ایدر وے. اگر موگیج ایڈوائزر کے پاس آپ جائیں گے تو اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ اسپیشلی اگر اب وہ موگیج ایڈوائزر جو ہول آف مارکیٹ ہو, تو وہ اس کے اندر آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سارے بینک سے آپ کو بتا سکے گا کہ یہ بینک آپ کو یہ آفر کر رہا ہے, یہ بینک آپ کو یہ آفر کر رہا ہے, اس بینک کی یہ چیزیں آپ کو پوری کرنی پڑیں گی کہ جو آپ نہیں کر سکتے تو یہ والا بینک آپ چھوڑ دیں. یو نو ہی ول بی ایبل ٹو ٹیل یو اے لٹل بٹ مور کمپریہنسولی کہ آیا کہ کون سا بینک آپ کو کتنے پیسے وہ دے سکے گا اور ان کی کرائٹیریا کیا ہے, اور آیا کہ آپ اس کرائٹیریا کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ مجھے بینک اتنے پیسے دے دے گا, چاہے وہ £1,00,000 ہو, £2,00,000 ہو یا £1,000,000 ہو, واٹ ایور اٹ از, اب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہمارے پاس پیسے ہیں جو ہم لوگ آگے پراپرٹی خرید. تو دس از دا بیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. پھر آپ ایک ایریا ایلوکیٹ کریں. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں انفارچونیٹلی, اسپیشلی لنڈن کے اندر, کیونکہ لنڈن کے اندر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بائی اے پراپرٹی, اور بہت سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ پراپرٹی خرید نہیں سکتے. میری ایڈوائس ان کو ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس امپلائمنٹ ہے اور آپ نے 4 پیسے سیو بھی کر لیے ہیں تو آپ پراپرٹی خریدیں ضرور. آپ بے شک اس کو لنڈن میں نہ خریدیں, آپ لنڈن سے باہر خرید لیں, آپ وہاں خریدیں جہاں پر آپ کی افورڈیبلٹی ہے, لیکن آپ یہ نہ کریں ہرگز کہ آپ پراپرٹی خریدیں ہی نہ. پہلے ہم لوگ کال پہ چلتے ہیں, پھر میں نوشیب کے کویشچن کے اوپر واپس آؤں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی میرا نام نادیہ ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی نادیہ. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ میں فرسٹ ٹائم بائر ہوں, جی جی اور the property value is 550. جی جی تو مجھے ڈپازٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے تھی, اور جو فرسٹ ٹائم بائر ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ is any make easy for me to basically I need help to guide us. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ Yeah. نادیہ. میں آپ کو بالکل, یہ آپ کا بڑا سملر کویشچن ہے نوشیب کی طرح, تو اچھا جی. میں آپ کو کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو جو پہلا سوال ہے وہ کویشچن آنسر کر کے پھر میں جی لازمی آپ کا کویشچن بھی آنسر کروں گا. ایک اور بات پوچھ سکتی جی ہوں جی آپ جی. سے؟ آپ کوئی لوئر اگر ریکمینڈ کر سکیں تو پلیز. اچھا, لائر بھی ریکمینڈ کرنا جی ہے. مجھے لوئر بھی چاہیے. اچھا, لائر میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا انفارچونیٹلی. آپ کو لائر چاہیے کس لیے؟ جو مجھے آگے ہیلپ کرے ہر چیز میں, اچھا, پراپرٹی بائی کرنے کے کنوینسنگ کے لیے. لیے. جی جی. میں آپ کو بتاؤں کہ دیر آر لاٹس آف لائرز آؤٹ دیر. ٹھیک ہے, آپ پریفر کریں گی کہ جو آپ کی مادری زبان بولے, اردو بولے, یا انگلش بھی چل سکتی ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سجیشن یہی کروں گا کہ آپ ویب سائٹس کے اوپر کوئی بھی کنوینسنگ کی لائر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, اس کے اندر ایک میں آپ کو ضرور بتا دوں گا بات, دا چیپسٹ از ناٹ دا بیسٹ. اوکے. ٹھیک ہے, تو پلیز کوشش یہ نہ کرنا کہ جہاں سب سے سستا مل رہا ہو. بہتر یہ ہے کہ آپ ریکمنڈیشن کے اوپر جائیں اگر کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے. کیونکہ آپ ایک بات ضرور یاد رکھنا, جو لائر ہے نا اس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے. ہی کین میک اے ڈیل اور ہی کین بریک اے ڈیل. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو وکیل ہو نا, کیونکہ لوگ یوزلی یہ کرتے یہ ہیں نادیہ کہ 100-200 پاؤنڈ بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پلیز وکیل کو آپ پیسے دیں, کیونکہ ہی کین میک اے ڈیل اور ہی کین بریک اے ڈیل. اور یہ جب میں یہ نوشیب کا کویشچن آنسر کروں گا تو آپ کو اس کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ جو وکیل ہے وہ کر کیا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا نمبر پیچھے چھوڑ دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ I'll certainly come back to you in regards to recommending not one lawyer, 2-3 lawyers آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا. پھر آپ ان سے بات کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کو
ज़्यादा सूटेबल कौन लगता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. बाय. अच्छा जी, कमिंग बैक टू नुशेब फ्रॉम ईस्ट लंदन, फर्स्ट टाइम बायर हैं. उन्होंने कहा कि यार प्रोसेस क्या होती है टू बाय अ हाउस, और मैं उनसे बात यही कर रहा था कि सबसे पहले आपने अपना फाइनेंसेस को देखना है कि यू नीड टू नो हाउ मच योर अफोर्डेबिलिटी इज़. वंस यू कैलकुलेटेड अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपने आगे घर देखना है. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है 2 लाख या 3 लाख, ठीक है, तो आप 2-3 लाख पाउंड, अगर 3 लाख पाउंड है तो आई वुड सजेस्ट कि 3-25 का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ऑफर्स ले भी लेते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप और बाज़ औक़ात नहीं भी लेते, तो ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा ना आपने वो रखना है, एक गैप कि भी आया होएगा या नहीं होगा. ठीक है, आपने 3 लाख पाउंड आपको मिल रहे हैं बैंक से फॉर इंस्टेंस नुशेब, तो आप 3 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी देखें, एरिया आइडेंटिफाई करें और उस एरिया के अंदर आप देखें कि आपको क्या क्या मिलता है. अच्छा, जब आपको आप उसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे स्टेट एजेंट्स के साथ, तो सबसे बेहतरीन हल ये है घर देखने का, वो ये है कि देयर आर सर्टन वेबसाइट्स. फॉर इंस्टेंस एक है वेबसाइट राइट मूव, एक है जूपला, और वेरियस वेबसाइट्स भी हैं, finderproperty.com भी है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं. लेकिन ये दो जो हैं ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मोस्ट स्टेट एजेंट्स यूज़ दीज टू वेबसाइट्स, जूपला एंड राइट मूव. उनके और आप देखें, बड़ी आसान है इस्तेमाल करनी. आप पोस्ट कोड अपना टाइप कर लें, आपको वहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. आप उनमें से क्लिक करें, जिस एजेंट के पास भी है आप उस एजेंट को फ़ोन करें, उस एजेंट के साथ आप रजिस्टर करें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द एजेंट विल आस्क यू अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस. फॉर इंस्टेंस योर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, व्हाट यू आर लुकिंग एट. अच्छा, और ये भी आप थोड़ा सा ज़रा ज़रूर जहन में रखें कि आप कोशिश ये भी करें कि आप स्टेट एजेंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाएं. वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप स्टेट एजेंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे तो आया कि जब कोई नई प्रॉपर्टी भी आएगी तो वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा. पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर आगे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. जी, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum, Brother Ali. How are you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू. कौन सा बोल रहे हैं? My name is Javid. I'm ringing you from North Wales. नॉर्थ वेल्स. And North Wales. Carnarvon, if it means anything to you. नो इट डजंट, बट नॉर्थ वेल्स साउंड्स वेरी रोमांटिक. It is beautiful, absolutely beautiful. जी जी. Mashallah, mashallah. It's equivalent to, not that I've ever been to Pakistan, it's equivalent to Murray. I was always being told by my relatives. Yes, so I was it's a actually in beautiful place. Wales last year. I Oh, climbed mashallah. Mount Snowdonia. Oh, fantastic. Then Yeah. how was your legs after climbing it? Oh my God, oh my God. And by the way, it was done by mistake. Totally. Oh, मैंने right. सोचा कि, you know, I was just literally, I thought, you know, I'll just go up a little bit. But then, you know, literally, and I had 10 children with me as well. वो दोस्तों के, I had my friends' Mashallah. kids with me, and we went all the way up. Oh, beautiful, Yeah, beautiful. it was quite a thing. जी, It हुक्म is. जावेद भाई, how can I help? It's just that, mashallah, mashallah, with Allah's rahmat, with Allah's blessing, I've been in the property business for 30 years. And I'd just like to share my thoughts with your advice to all the first-time buyers. Please remember, I beg you to remember as first-time buyers, and I'm sure Bhai Ali will agree with me, जी जी. you can always increase the price, but you can never decrease an offer. Right? So therefore, if a property is on the market for 400,000, 500,000, whatever, do your mathematics, do check out what is the going rate in that street or in that area. And if the properties in that area has been sold as even as low as 450, 425, then check your property that you're looking at and make a fair offer. And if the offer is not acceptable, you can always go back again and increase it. So Absolutely.
Ali Bhai, forgive me if I'm interrupting with your Not at all, program. not at all, Javed bhai. Thank you. That's actually, but there are instances. My background, I'm now a qualified mortgage advisor, but in my past life, I've been an estate agent for around, say, 20 years plus. MashaAllah. There is a very slim line in terms of what you're saying as well, because I've had people make very cheeky offers as well. And there is a certain kind of a person who says, right, okay, he's made a cheeky offer, and even if they go up, the vendors sometimes don't want to know. So yes, but there has, just the way you said it, do your research, make an offer, but make a sensible offer. I Well think said. the word is sensible offer. Perfect. Absolutely. Thank you very much for your time, and Thank you for so much, Javed bhai. That's so kind understanding of you me. Thank you. to come on and give us your thoughts as well. That was actually lovely. Thank you so much, Javed bhai. And we'll be North Wales, say, which is phenomenal, absolutely phenomenal. Acha, right, okay. So just coming back to Nosheb's thing, and we were talking about the process of buying a property. So you register with a lot of estate agents. Obviously, my thing is that please do try and make a relationship with these estate agents as well. It is very important. Acha. Now, I know that there are some unethical companies out there as well, unethical estate agents out there as well, who will insist that you use their brokers, or they will insist, and that is conditional selling. Acha. I need my viewers to be very wary of this as well. Please do not fall into that trap, because that is illegal. Okay? If an estate agent says to you, okay, you must see our mortgage broker, there is no such thing. Okay? That is not a legal obligation. Okay? The obligation that you have is when you make an offer to an estate agent, you're obliged to actually give him proof that you are able to conclude the deal. For instance, you can show him a mortgage in principle. He can ask you where the deposit is coming from. He can ask you for proof of deposit as well. So these are certain things that he might ask you for. But under no circumstances can any estate agent insist that you use their brokers. And that would be conditional selling. And that's something that all our viewers should be very wary of. And if an agent does that, you can actually report them as well for conditional selling or for trying to conditional sell. And I know that there are some estate agencies that do that. And some are actually corporates as well. So you can, in hindsight, you can actually see that this sort of thing, it does go on. And, from my point of view, it is unethical and it should not be something that we should nurse in that sense. Okay? Acha. Now, you've registered with the estate agent. Your next phase is, Nosheb, you will start then looking at properties. Okay? Go out, view properties. Acha, once you've viewed a property, okay, try and revisit the property again if you like the property before you make an offer. It's always best to actually, ek dafa dekh liya aapne, or you've seen it once, there might be certain things that you've missed out on. Do you know what I mean? You want to go back in again and go and have a look at it again. But before you do the second viewing, tell the estate agent that you are definitely interested in this property, just in case somebody else comes along and makes an offer, because then the estate agent is then obliged to come back to you and say, well, look, we now have an offer on this. What do you want us to do? So, it's always best to act, and that's one of the reasons why you have that estate agents, why you have that relationship with the estate agents as well. Once you've actually finalized the property, then you can actually make an offer. And just on Javed bhai ne kaha tha ki do your research. Research jo hai badi aasan si hoti hai. You can go on Rightmove, you can go on Zoopla, and you can see what prices the houses have sold at, what prices they're actually selling at. And with that in mind, you make a sensible offer. Nazreen, हमारे पास वक्त unfortunately ख़त्म हो गया.
بڑا مزہ آیا, بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار یور کالز. اینڈ اگلے ہفتے میں پھر سے حاضر ہوں گا. اگلے ہفتے ہم لوگ گیسٹ کو لے کے آئیں گے, اور آپ کوشش میں یہ کروں گا کہ جو سوالات یہاں آج ہوئے ہیں ان کے حساب سے ہی میں کوئی گیسٹ لے کے آؤں. تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. میری طرف سے اللہ حافظ.